Okay, so I think now it's started. So I am going to share my screen. So anyone of you, please confirm when will be visible. Please confirm. Is it visible? Yes, sir. Okay, fine. So as you know, we are discussing about Unit 3, and Unit 3 we have discussed many diseases. And in today's lectures, we are going to discuss last disease with respect to nervous system, and that is a schizophrenia. So these we have already discussed: iron deficiency, thalassemia, hemophilia, endocrine system, diabetes, epidemiology, pathogenesis of diabetes, complications, treatment, thyroid disease, thyroid function, types, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, disorder of sex hormones, male sex hormones and female sex hormones, what is its etiology. And in nervous system disorders, we have discussed about epilepsy, types of epilepsy, what is its etiology, and what is pathogenesis and diagnosis, and a little bit about the treatment. Alzheimer disease, we have discussed about its etiologies, pathogenesis, various hypotheses with respect to Alzheimer disease, like cholinergic hypothesis, inflammatory hypothesis. These are some of the studies which we have done recently with respect to nervous system diagnosis, how to diagnose the patients, and what treatment we can give. We have also discussed about Parkinson disease, its etiology, pathogenesis of Parkinson disease, how to diagnose the Parkinsonism patients, what imaging testing we can do, treatment, stroke we have discussed, what different types of stroke, etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment. In psychiatric disorders, in last class we have discussed about depressions and what is different disorders, epidemiology of the depressions, what is its etiologies, pathogenesis with respect to depressions, and how to diagnose the depressive patients, and what treatment we are giving to the patients of depressions. Today's we are going to discuss about another important neurological disorder, and that is the schizophrenia. So schizophrenia is actually the disorder of the thoughts, when there is a disturbance in the thinking process, perceptions, emotions, language, sense of self and behavior, that we call a schizophrenia. In schizophrenia, patients feel means there is a loss of connections between the reality and actual things. So there is a persons might experience the hallucinations, delusions. These are the signs of schizophrenic patients, and schizophrenia particularly affecting many peoples. And if you ask which age group is more prone for the schizophrenia, so it can happen at any age, but particularly 18 to 40, 45 year of age is mainly prone populations for the schizophrenia. So in schizophrenia, I think someone is asking for admit. Okay. So etiology of schizophrenia, there is a genetic reason for it. Genetic, some genes are responsible for the development of schizophrenia. But of course, genetic factors interact with the environmental factors and make a development of that particular disease. So in environmental factors, the person living in a poverty or living in very stressful surroundings or exposure to some viruses or nutritional problems before birth, so that persons are more prone for the schizophrenia. Sometimes brain structures, I think again someone is asking for it. So brain structure, some persons' ventricles are dilated or temporal lobe is shrinkage is there. It has been observed that persons are also more prone for the development of schizophrenia. Disturbances in childhood, if happens, like means happening in
Afghanistan's or in Taliban's or all these countries. So these disturbances early in childhood could also result in the development of, or that make a person more prone for the development of schizophrenia. So these are the some of the reasons, but again, exact etiology is not clear. We are assuming genetic factors and with environmental factors, these kind of persons are more prone to the development of schizophrenia. So if you see the pathogenesis, as if you remember in last class also we have discussed about, or in any brain disease, the neurotransmitter level is decrease or increase, and accordingly we are giving the treatment. If level is decreased, we are giving such type of chemicals or drugs which will increase that level. If level is increased, so we are giving the antagonist of it. We want to suppress it, right? So depending upon the disease mechanism, depending upon these level of neurotransmitters, we are creating a new chemical entities, and drugs are available in the market on based on this. So in schizophrenic patient, it has been observed that there is a increase in the level of dopamine. So if you remember, the dopamine we have studied when we have discussed about the Parkinsonism, right? So in Parkinsonism, we have discussed dopamine level is decreased, right? Whereas in schizophrenic patients, dopamine level is increased, right? It's the inverse of it. In Parkinsonism patients, dopamine level is decreased. If you remember, I told you in Parkinson patients, what kind of treatment we are providing. We are providing dopaminergic agonist because we want to increase the level of dopamine, which is decreased in the Parkinsonism. But in case of schizophrenic patients, it has been observed that the dopamine level is increased. So in that case, we have to give the dopamine, we have to give such type of drugs or chemical which will reduce the level of dopamine. That is the difference. So again, dopaminergic neurons means how this dopamine is synthesized, tyrosines, then tyrosines hydroxylase enzymes which convert tyrosines into a levodopa. You can see structure wise also, or you can write structure wise also in your exam. Tyrosines, this is the structure of tyrosines, and tyrosine is the one of the amino acids, and amino acids is made up of means there is a one carboxylic group and amine group, right? So this is the tyrosine. So tyrosine hydroxylase is the enzymes which convert this tyrosine into the L-dopa. So tyrosine hydroxylase, that means it will add the hydroxyl group in this particular molecule. So if you see these structures, you will find this hydroxyl group is added, right? Rest is same. So that convert into a levodopas, and then there is a removal of these carboxyl group. Dopamine decarboxylase enzymes will remove this carboxyl group and convert into a dopamine. So it's very simple to present pathogenesis with respect to figures also, because these are not complicated figures. You have to just understand, so okay, tyrosine hydroxylase is enzyme which will add the hydroxyl group, and decarboxylase is enzyme which will remove this carboxylic group, and rest is same. So that is the structure of dopamine. And these dopamine, as you know, these neurotransmitters are synthesized and stored in the vesicles, and after storage, these neurotransmitters, whenever the signal will generated, and again this process of signaling is same. There is a movement of positive ions like sodium ions, calcium ions. So these ions will results in the exocytosis process, and exocytosis is a process by which the neurotransmitter which is stored in the vesicle is released in the synaptic left. So that is the exocytosis process. So it's released, and in postsynaptic membranes there are receptors. In this case, there is a dopamine. So there is a dopamine receptors, and dopamine receptors are many subtypes: D1, D2, D3, D4, D5. So these act on these receptors, and depending upon the category of receptor with which these receptor belongs, because receptors are different types. Some receptors are nuclear receptors, some receptors are your G protein coupled receptors, some are ligand gated ion channel receptors, some are your kinase receptor. So depending upon the nature of receptors and which pathway they will further activate, your response will be generated. So in this case, in schizophrenic patients, when you are writing the pathogenesis, so what you have to be present in the figures, you have to be present this biosynthesis,
what very important point is, in this synaptic left, you have to mention increased level of dopamine, right? I hope it's clear. So increased level of dopamine in synaptic left. So increased level of dopamine, then you can show these overactivations of these dopamine receptors, and overactivations of dopamine receptor will result in a schizophrenic patients, the schizophrenic like symptoms, right? So this is about pathogenesis of your schizophrenia. Next thing is how to diagnose schizophrenic patients. And if you remember, we in every neurological disease, it's very important. These physical symptoms are very important. It helps us to diagnose the patients to a certain point, because laboratory examinations will not play that much significant role in case of neurological disease. So these symptoms wise you can diagnose. Yes, so in case of schizophrenic patients, there is a perception bias. A person may think other people are talking about him or her, or person will say, I am hearing the voices which is not real. So some persons are have a positive symptoms like delusions, hallucinations. So delusion means someone there is a false belief, means there is a something is there, but that is a false. But the schizophrenic patients are assuming it's right, but that is not the actual the thing. So that is the delusion. Hallucination means you are hearing the voices which are not actually there. So that is the hallucination. So such type of complaints, if patients are uh, uh, is decreased emotions, means sometimes become very aggressive, sometimes very lazy, lack of interest. So all these are the symptoms which will help us to diagnose the patients. Cognitive functions, memory, learning, and understanding is also affected. So all these symptoms, if the persons have, and persistent these symptoms for at least 14 days or 7 or 14 days, so you will get an idea. Yes, these persons might have a schizophrenia. Specific laboratory test we don't have, but yes, the symptoms will help us to diagnose. So in treatment of schizophrenia, we are giving the CBT therapy. There are many psychological therapies which are we are providing for a schizophrenia patients or depressive patients. So cognitive CBT, cognitive behavioral therapy is one of it, where that family members also get a training how to deal with the schizophrenic patients. There are antipsychotic medicines we are giving for the treatment of schizophrenia, and these antipsychotic medicines, actually what they do, they will do the decrease in the level of dopamine, which is increase in the schizophrenic patients. So as I told you in pathogenesis, the dopamine level is increased in the schizophrenic patients. So we have a, whatever the drugs we have in the market for the treatment of schizophrenia, they decrease the level of dopamine. So we have a dopamine blockers. So, but again, means if we are giving a dopamine blockers and the persons have a Parkinsonism also with schizophrenia, so it's very difficult to manage, because if we are decreasing the level of dopamine, so their Parkinson's symptoms can be aggravated, right? So these points we have to keep in mind. So this is about schizophrenia. Next, we are going to discuss about gastrointestinal system. And gastrointestinal system, peptic ulcer is the one of the important disease. But before going to the peptic ulcers, I will try to explain in Hindi also, because many students asked for it. So I think someone is adding message. Anyone have any question so far? Okay. So schizophrenia, as I told you,
कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसका जो थॉट प्रोसेस जो है हमारी बॉडी का वो अफेक्ट होता है। सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को अगर किसी को कोई पेशेंट्स या कोई पर्सन मीन्स कंप्लेंट करता है कि उसको ना कुछ आवाज सुनाई दे रही है, कोई चीज आ रही है, कोई उसको मीन्स लग रहा है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा मीन्स वो वाइब्रेशंस और ये सब हो रहा है, मैं जो कि रियल नहीं है, कुछ उसको ऐसी चीजें सुनाई दे रही हैं, कुछ वो चीजें फॉल्स बिलीव कर रहा है। फॉल्स बिलीफ के लिए जो डेल्यूजन इज ए फॉल्स बिलीफ। इफ आई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे सपोज रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, तो एक नॉर्मल आदमी है और एक ऐसा आदमी जिसको सिजोफ्रेनिया के चांसेस हो सकते हैं, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट। तो रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, तो इनिशियली तो क्या होगा कि जो नॉर्मल आदमी है और जो सिजोफ्रेनिक है, दोनों को हो सकता है, लग सकता है कि वो सांप है, इट्स ए स्नेक, लग सकता है दोनों को। पर जो नॉर्मल आदमी है, जब उसको वेरीफाई किया, तो उसने वेरीफाई किया और उसे लगा यार ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, हमें लगा कि ये सांप है। तो दिस इज अ नॉर्मल पर्सन। जो सिजोफ्रेनिक होगा, वो आपने उसको बता भी दिया कि ये रस्सी है, पर वो फिर भी नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये सांप ही है। फिर वो दोबारा देखेगा उस रस्सी को, बोलेगा सांप है। तो दैट इज बी कॉल्ड ए फॉल्स बिलीफ, एक्चुअल में वो नहीं है। तो यू कैन डिफरेंशिएट। हेल्सिनेशंस मीन्स आप जो कि वॉइसेस एक्चुअल में है नहीं, तो उनको वो सुनाई देने लगती हैं। उनको ये उनकी परसेप्शन ये हो जाती है कि जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, जो कि एक्चुअल में वैसा है नहीं। या इस तरह का उनको लगेगा कि जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होंगे कि बाहर निकलूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो उस डर से बाहर नहीं जा रहे हैं। उनके स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो अज्यूम पहले ही सारी चीजें कर लेंगे कि मैं एग्जाम दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और एग्जाम ही नहीं दे रहे हैं। और उनकी पूरी डेली जो लाइफ एक्टिविटीज हैं ह्यूमन की, वो अफेक्ट होती हैं। तो और जो पर्टिकुलरली जो रूरल पॉपुलेशंस है, गांव की पॉपुलेशंस है, आपने भी सुना होगा जो तांत्रिक और ये सब। तो हो सकता है जो तांत्रिक है या जिसको लगता है कि उसमें कोई ऐसी पावर आ गई है बॉडी में, हो सकता है दैट एंड मीन्स हो नहीं सकता, मीन्स होता है कि वो पर्सन जो है दैट इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, क्योंकि वो अनट्रीटेड चल रहा है। और गांव में क्या होता है कि फिर वहां पे वो भीड़ शुरू हो जाती है लोगों की, तो क्योंकि उसको वो आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देती। तो दैट आर द सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। एंड लोग वहाँ पे में से कई लोग गांव के होंगे, उनको पता है कि कितनी भीड़ लगा के सब दूर दूर गांव के वहां जाएंगे कि उनसे पूछेंगे कि मेरे फ्यूचर में मेरे को जॉब कब मिलेगी, मेरा ये क्या होगा, वो क्या होगा, एंड दे आर टेलिंग समथिंग समथिंग, एंड लाइक दैट इट्स हैपनिंग। तो दैट नीड टू बी करेक्टेड। एंड जिस पर्सन को ये सिम्टम आ रहे हैं, उसको नहीं पता चलता कि उसको कोई बीमारी है या क्या है, सिजोफ्रेनिया है क्या है। तो वो बिलीव करता है कि हाँ, मीन्स वो वैसे ही डील करने लगता है, बट इट शुड नॉट बी अनट्रीटेड, इट विल रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरह के सिम्टम से हम वेरीफाई करते हैं सिजोफ्रेनिया। कई बार क्या होता है कि जो लोग नशे वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनमें भी इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। तो क्योंकि उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो हम अलग कैटेगरी की बीमारी में आता है, ये हमारा अलग कैटेगरी में आता है। तो वो थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अदरवाइज अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं पेशेंट्स में, अगर वो बात करते करते जैसे नॉर्मल बात कर रहा है, बीच में चिल्ला चिल्ला गया, फिर नॉर्मल बात किया, फिर उसको कुछ चिल्ला गया, या किसी जो एक नॉर्मल सी चीज है उस पे उसका बिहेवियर इतना अल्टर हो गया कि आप सोचें कि अरे इसको क्या हो गया। और ये अगेन ये चीजें बार बार हो रही हैं, मीन्स एक कंटिन्यूअस फ्लो में चल रही हैं। 15-20 दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए उसका बिहेवियर वैसा ही रह रहा है, देन देर इज ए नीड ऑफ ट्रीटमेंट। अब तो ये सिजोफ्रेनिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी और पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर
कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पेशेंट्स को कि ये अल्जाइमर का है। अल्जाइमर में हमने बात की थी कि उसका कॉग्निटिव फंक्शंस डिस्टर्ब होता है, पार्किंसन में उसका मोटर फंक्शंस, और डिप्रेशन में उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का होता है, और सिजोफ्रेनिया में किस तरह का होगा। तो रीजन क्या है इस चीज के, तो जेनेटिक इज प्ले मेजर रीजन। पर जेनेटिक का मतलब ये नहीं होता कि उस जिस पर्सन में वो जीन है तो उस पर्सन को वो बीमारी होगी ही होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैनी जिनमें वो जीन है पर्टिकुलरली, बट that persons are not converting into a disease because they are maintaining everything in their life accordingly, right? तो इसमें अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, अगर आप में जीन है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स साथ में मिल गए, और इस तरह के फैक्टर मिले, स्ट्रेसफुल सराउंडिंग है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है काफी ज्यादा, तो धीरे 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 वो आपको मोर प्रोन करता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो सिजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकता है। डिस्टर्बेंसेस हुई हैं चाइल्डहुड में या कुछ और प्रॉब्लम हुई हैं, तो वो सारी चीजें आपको सस्पेक्टिबल करती हैं सिजोफ्रेनिया होने में। तो राइट, सो दीज आर द इटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस मैंने जैसे बताया कि कोई भी बीमारी होती है नर्वस सिस्टम्स की, तो उसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, और हमारे न्यूरॉन्स की जो भी सिग्नल्स जाते हैं दे विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल। तो इस केस में जो हमारी डोपामीन है, और डोपामीन कैसे सिंथेसाइज होता है, टायरोसिन, फिर टायरोसिन से लिवोडोपा बनता है, फिर डोपामीन बनता है, बनने के बाद ये फिर स्टोर हो जाएगा वेसिकल में, और फिर जब सिग्नल जब जनरेट होगा, जब आपके पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करेंगे, देन इट विल रिलीज, और रिलीज होके उस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे बीच में जो दो न्यूरॉन के बीच गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक पे इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर होते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन है तो मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे। अगर एडरलिन है, नॉन एडरलिन है, तो हमारे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर होंगे। और डोपामीन है तो D1, D2, D3, D4, D5 रिसेप्टर होंगे। अगर हमारा सेरोटोनिन है तो आपको कल जो हमने सेरोटोनिन की बात की थी डिप्रेशन में, तो वहां पे 5-HT1, HT2, HT3, HT4 ये वाले रिसेप्टर्स होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर वो उस रिसेप्टर्स पे बाइंड करके फिर आगे की सिग्नलिंग एक्टिवेट करता है, और फाइनली हमें रिस्पॉन्स मिलता है किसी भी चीज का। तो इसमें क्या होता है सिजोफ्रेनिया में कि जो डोपामीन लेवल है वो एक्सेस में रिलीज होता है, एक्सेस में बनता है। तो ये डोपामीन फिर एक्सेस ऑफ डोपामीन, तो इस तरह की आपकी जो डिसओरिएंटेशन हो जाएंगी थॉट्स प्रोसेस में, कोई भी डेल्यूजन हो जाएंगे, हेलुसिनेशन हो जाएंगी, वो सब चीजें होती हैं, राइट। तो तभी हम जो दवाइयाँ देते हैं सिजोफ्रेनिया में, दवाइयों की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वी आर फोकसिंग ऑन पैथोफिजियोलॉजिस्ट। तो दवाइयों में अब आप खुद ही समझ चुके होंगे, ओके बीमारी किस वजह से हो रही है कि डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है, तो हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि डोपामिन के लेवल को कम करें। चाहे हम यहाँ इसकी रीअपटेक बढ़ा दें, चाहे हम डोपामिन को यहाँ ब्लॉक कर दें, D1, D2 को, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा बनता है। यहाँ पे आप वो वाली दवाइयाँ नहीं दे सकते जो कि इस डोपामिन लेवल को डिग्रेड करती हैं, इंजाइम्स। जैसे आपने अगर याद होगा तो यहाँ पे सिनेप्टिक लेफ्ट में इंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, क्योंकि जितना सिग्नल जाना है फिजियोलॉजिकल रोल में वो गया, और जो बाकी बचा वो उसने डिग्रेड कर दिया। जैसे आपने याद होगा आपको माओ है, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज, कॉम्ट है, COMT, जो कि इनका डिग्रेडेशन करता है डोपामिन का। तो हम पार्किंसोनिज्म की अगर बात करते हैं तो हम क्या देते हैं, उन इंजाइम्स के ब्लॉकर देते हैं कि उनको ब्लॉक करें जो कि डिग्रेड कर रहे हैं डोपामिन, और डोपामिन के लेवल को बढ़ाएं जो कि कम हुआ है पार्किंसोनिज्म में। बट इस केस में सिजोफ्रेनिया में क्या हुआ है, डोपामिन का लेवल बढ़ा है। अगर आप माओ इनहिबिटर्स या इन एंजाइम के इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा, डोपामिन का लेवल और बढ़ जाएगा, तो वो उस कंडीशन को और वो कर देगा, खराब करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारी पैथोजेनेसिस है। अगेन जैसे अगर आपको पार्किंसोनिज्म का मैकेनिज्म लिखना है और सिजोफ्रेनिया का, सिंथेसिस तो सेम रहेगा, बायोसिंथेसिस का मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, चाहे पार्किंसन है चाहे सिजोफ्रेनिया है, तो सब में ऐसे ही डोपामिन सिंथेसाइज होगा, कोई अलग वे तो नहीं होगा। तो दोनों के मैकेनिज्म सेम रहेंगे बायोसिंथेसिस के।
बट बायोसिंथेसिस के बाद जब यहाँ रिलीज हो रहा है तब आपको यहाँ पे सीजोफ्रेनिया का अगर लिख रहे हो तो आपको दिखाना है डोपामिन लेवल इज इंक्रीज, बल्कि अगर पार्किंसन का दिखा रहे हो तो आपको लिखना है डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। इतना डिफरेंस है, बट इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। इसमें अगर गलती करोगे, उस वहां इंक्रीज वहां डिक्रीज वहां इंक्रीज लिख दिया, यहाँ डिक्रीज लिख दिया, तो इट विल मीन सारा ही आप वो उसको चेंज कर दोगे। तो डायग्नोसिस डायग्नोसिस की बात है तो डायग्नोसिस में वही है कि सिम्टम के बेसिस पे कि पर्सन में थिंक अबाउट अदर पीपल्स, कि वो मेरी बात कर रहा है, उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, कोई मीन्स कोई खिड़की से कुछ आ रहा है, इससे आ रहा है। तो वो फॉल्स जो परसेप्शंस हैं वो सब चीजें शुरू होती हैं। नेगेटिव कॉग्निटिव भी डिस्टर्ब होते हैं। और ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हम पेशेंट्स को अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है या न्यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, तो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो कैसे हेल्प करती हैं कि जैसे मान लो किसी को सिजोफ्रेनिया है, वो बात करते करते कई बार अग्रेसिव हो गया या कुछ आपको लग रहा है कि उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो इन थेरेपीज में हम पेशेंट को यही बताते हैं कि उसको आप बार बार ये ना बोलें कि तुझे बीमारी है, तुझे बीमारी है, या आप उसकी जो भी वो बात बोल रहा है आप उसको बोल रहे हो कहाँ है। जैसे मान लो उसको, मैंने कहा कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो कि रियलिटी में है नहीं, और आप बार बार जब उस चीज को उसकी काटोगे, आप बोलोगे कहाँ है आवाज, आवाज तो आ नहीं रही है, हमें तो आ नहीं रही है, तुम्हें आ रही है, ये है वो है। तो क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट उस तरह की हुई है, तो उस टाइम पे आपको जो वो बात बोल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, हाँ हाँ आ रही है, ओके। तो उसका फिर माइंड जो है रिलैक्सिंग स्टेज में जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जो नेचुरली जो होता है वो क्या होता है कि मान लो अगर सिजोफ्रेनिया का है कोई भी पेशेंट, और घर में अगर सिजोफ्रेनिया किसी को ऑब्जर्व हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो सकता है ये डिजीज भी हो सकती है, तो उसने बोला कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या मुझे मतलब वो मान नहीं रहा है बात कुछ, तो हमेशा जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसमें रिएक्शंस वही देंगे बार बार कि नहीं, हमें तो नहीं सुनाई दे रही, तुम्हें, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ही सुनाई दे रही है, जिसका दिमाग खराब हो गया, ये है वो है। तो वो कंडीशंस को और खराब करता है इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, क्योंकि उसको वो चीजें सुनाई दे रही हैं, आपको नहीं सुनाई दे रही हैं, और आप उस चीज को बार बार डिनाई कर रहे हो। तो आपके बार बार डिनाई करने से वो मानेगा तो है नहीं, क्योंकि वो तो उसके उसमें है, दिमाग में वो चीज वो कर गई है। तो उस केस में यही एडवाइस होती है कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर लें, ओके ठीक है सुनाई दे रही है, ओके, और आप एक फिजिशियन से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से, और ट्रीटमेंट चलाएं। और उसकी बात को बार बार काटे ना, और उसको बार बार समझाएं भी ना कि तेरे को बीमारी है, तेरे को बीमारी है। उससे फिर साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट और पड़ता है डिजीज पे। तो ये सब चीजें चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, चाहे साइकोसिस का है, चाहे इसका है, तो हमेशा जो नॉन, इनको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मीन्स without giving the medications, how we can treat the patients, so that we call a non-interventional. So in neurological, non-interventional plays a significant role। आपको उसको समझाना समझाना भी नहीं, मीन्स आपको हाउ टू डील सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। सो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मैंने बात करी ली कि हम इस तरह की मेडिसिन उसको देंगे जो डोपामिन लेवल को ब्लॉक करे। तो अगर आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कि जो साइकोसिस में जो हम दवाइयाँ देते हैं वो डोपामिन के लेवल को कम करती हैं। सो दिस इज अबाउट सिजोफ्रेनिया। एनी क्वेश्चन सो फार, और वी कैन मूव टू नेक्स्ट डिजीज। So this is about neurological disease. So now we are moving to next disease, and this is the last disease of Unit 3, and very important disease with respect to examinations. I have seen in many examinations these peptic ulcer is most commonly asked. Yeah, with respect to examination, it's very important. So gastrointestinal, this is peptic ulcers, and with respect to gastrointestinal disease, and you can see the pictures. I think every one of you knows about
digestive systems. What are the different part of digestive system? You might have learned in your human anatomy and physiology classes. Stomach parts, cardia, fundus, body, pylorus. Then there is a small intestine. Then there is a large intestine. Then small intestinal parts. So everything, I think every one of you knows. So in peptic ulcer, what happens? In our stomach there is a production of strong acid, and strong acid which is produced in the stomach is hydrochloric acid, right? So hydrochloric acid. So the question is, when you are doing a experiments with respect to chemistry, we are using we are doing the titrations, strong acids with the bases, HCl with NaOH. So in that case, if suppose during the experimentations, if some HCl falls on your lab coat or something, so you can see how much it is means irritative, or how much it's corrosive. So now question is, if this acid is produced in the stomach, so how we are living? Means it's a strong acid, it will destroy the lining of stomach. But yes, of course, the nature have a provide us a protective mechanism also, by which it's protect us from the harmful effect of HCl or corrosive effects of hydrochloric acid. And how it's protecting it? These linings will release a mucus, and that mucus is basic in nature. So when HCl will touch the surfaces of these one, it will not create any harm. So this is a normal physiological process. But in case of peptic ulcers, what happens? Your HCl productions is increased, and your protective mechanism, that is mucus formations or bicarbonates, which protect us from the these one harmful effect of these hydrochloric acid. So in fact, and there is a balance, right? So when there is an imbalance happen, and in imbalance, what will happens when persons going to develop a peptic ulcer, their HCl level is increased, and the defensive factors like mucus, bicarbonates, their level is decreased. So if this happens, so what will happen? It will do the corrosive, or it will do the harm to the lining, and that results in the development of disease that we call a peptic ulcer. So if you see in slides, so there is a acid is the one of the aggressive factors. Pepsin is also an aggressive factor which can do the damage. NSAIDs are well known for peptic ulcers. Overuse of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, if you are using or doing the overuse of it or unnecessary use of NSAIDs, it also could result in the development of peptic ulcers, because it is a aggressive factors. And another aggressive factor is H. pylori. That is one of the bacteria. So these bacteria also could do the damage to the lining, right? So H. pylori cases, particularly in India, are much more. And defensive factors is mucus and bicarbonates. So in peptic ulcer, defensive factors level is decreased, and aggressive factors such as acid, pepsin, or NSAIDs or H. pyloris, their level is increased. So it results in a disease that we call a peptic ulcer. Etiology is, as I told you, H. pylori is one of the reasons for the infections, particularly in countries like India, where many populations are not following hygienic conditions. So this H. pylori infection can happen, and this H. pylori infections could result in the development of peptic ulcer. As I told you, long-term use of NSAID or unnecessary overuse of non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen. There are many NSAIDs molecules are available in the market, so overuse of it could also result. Stress is also the one of the factors which could increase the productions of hydrochloric acid in the stomach. Spicy food, of course, could result in a more production of HCl. Smoking, alcohol, it could also result in this one. And long NSAIDs do the destructions of protective layer also. They decrease the mucus or bicarbonate productions also. Pathogenesis. So before pathogenesis, you have to understand how this hydrochloric acid formed in the stomach. So if you see this figure, so whenever we are taking the food, normal physiology, how this HCl is produced in our body, in our stomach.
So when food enters, so these gastrin, there is G cells. These gastrin is released, and released gastrins will activate CCK2 cells. I forget actually chyloscytokinin receptors, and which will further activate this pump. And this pump is be called a proton pump. This is the hydrogen potassium pump. This is the pump which do the movement of hydrogens and potassium ions. So hydrogens will go to the lumens and potassium goes the insides. So this is the one step of how this gastrin and gastrin activate the release of more H positive ion, and more H positive ions combines with the fluoride ions and do the production of hydrochloric acids. So this is the one thing. Another thing is when we are taking a food, after that our vagus nerve is also activated, and vagus nerves will do the release of acetylcholine. And as I told you, acetylcholine is act on the receptors, and acetylcholine receptors are muscarinic and nicotinic. So it acts on the enteric nervous system. So if when you have, I think someone have unmuted. Uh, will you mute yourself? Mute yourself. Hello. Very good afternoon. मैं आपको 10 मिनट में करूँ, मैं आपकी क्लास ले रहा था. हाँ, ठीक है. Enteric nervous systems, and the acetylcholine is released, and acetylcholine act on the muscarinic receptors are present in ECL cell, enterochromaffin like cells, and it do the release of histamine, and the histamines receptor are H2, which follow the CMP pathway, and it activates this proton pump. This is another mechanism. Directly also acetylcholine act on M3 receptors, which follow the IP3 DAG pathway and activate this proton pump. So these are the mechanisms. So more the release of H positive ions will combine with chloride ions, will do the much more production of HCl. But normally it's in physiological conditions, this HCl will form and help in the degradations of food materials, and then it will be absorbed, right? But in case of over stimulations or over activations of this proton pump, more H positive ions will combine, and more production of HCl could do the damage in the lining and result in the formations of peptic ulcer. So if you see the medicines which we are giving for a peptic ulcer patients, we are giving proton pump inhibitor. Like many of you might have heard about rabiprazole, pantoprazole. So these prazole are proton pump inhibitor. They inhibit this pump because this is a pump which is do the movement of H positive ions inside the stomach. So we have a proton pump inhibitors. We are giving the anticholinergic drugs because acetylcholine, more release of acetylcholine activate these histamines and do the activations of this proton pump. More release of acetylcholine directly act on M3 receptors and activate this proton pump. So we are using the anticholinergic drugs also for the peptic ulcer. We are using the proton pump inhibitor also. We are using the antihistaminic drugs also. So because more release of histamines is also activating this pump. You can see these histamines act on H2 receptors and activate this proton pump. So histamines, antihistaminic, anticholinergic, or proton pump inhibitor. These drugs we are using. So this is about the. But in case of pathogenesis, you have to write. Okay, you can write about the stress, whatever the factor we have discussed, stress, NSAIDs, or these one. These activate this proton pump, and more release of HCl will do the damage. Diagnosis, major diagnosis, burning stomach pain is complained by the patients of peptic ulcers, and burning stomach pain is very severe. Sometimes it's very difficult to differentiate that pain with respect to heart attack pain. So if you remember when we have discussed about the heart attack pain, so the cardinal signs of pain related to heart, how it's differ from a gastric pain or these kind of pain, peptic ulcers. Can anyone tell? Means if you remember in when we have discussed about myocardial infarctions,
we have discussed about these things. So in angina also. So in the pain with respect to heart will goes towards your left arm and jaw, that all things will involve. So you can sense it. These persons might have these heart problems. Instead of, if the persons have only pain in the chest and there is a burning stomach pain, so you will think of it's a related to gastric systems. So heartburn is there, nausea is there, and on the basis of these symptoms, you can sense whether the persons have a peptic ulcer. But of course, we are doing laboratory examinations also, and oftenly the physicians writing these two common tests, endoscopy and biopsy. So first, endoscopy. So endoscopy is a procedure by which we are inserting one little small pipe through mouth inside the esophagus and then intestine, and that contains a camera and takes the screen that one photographs of all the linings, and from that one the physicians will identify whether the persons have a ulcer and where it is actually. So that endoscopy will help, and biopsy is a procedure by which, after confirming yes, in this particular part this is the ulcer formation, so through biopsy procedures what we are doing, we are collecting that particular part for the microscopic examination. So biopsy, you can see these type of microscopic examinations we are doing, and then we are thinking more, means we are analyzing these pictures, and then we will get to know how much it affected and how severe it is. So this is the diagnostic procedure, and as I told you, treatment, antacids also we are using, and antacids, what antacid will do, where antacid will work. Antacids are weak bases, right? So weak bases, when you are taking antacids, so excess production of HCl will combine with the base and it will neutralize. So that is the antacids we are using. But antacids are useful when there is a pain, when there is a, if you are using you can't use the antacid for the preventions of the ulcer, because if suppose someone have a ulcers, or that in that particular time if you are giving antacids where HCl is not produced much more, so it's of no use. So antacids will neutralize work here only. Another is proton pump inhibitor. As I told you, these pump will be inhibited, which do the production of more H positive. H2 receptor antagonist means histaminic receptor antagonist we are giving. Anticholinergic drugs we are giving. Prostaglandin analogs also we are using in the treatment of ulcer, because this is a one mechanism, excess production of HCl. Another mechanism is this defensive layer, and this defensive layer, bicarbonate, prostaglandin make this defensive layer against this HCl, right? So if, as I told you, in ulcers there is a imbalance. Imbalance means HCl production is increased and these protective defensive layers level is decreased. So we want to give some kind of medicines which will increase this defensive layer also. So that medicines are prostaglandin analogs, right? We are also giving some ulcer protective agents also, because if ulcer is there and will create a lot of problems. So we are giving the ulcer protective. These agents will make a coat on that ulcer. So these produce HCl will not do the further damage, or patients will not feel the pain because it's already coated by something. So HCl will not do the harm. Also protective agents also we are using, then ulcer healing agents to slowly to heal it. And antibiotics, of course, when we are also doing this, so I have not included here, but that is very important. Please include in this diagnosis H. pylori testing, because as I told you, particularly in a country like India, H. pylori induced peptic ulcer cases are much more, and due to unhygienic conditions. So in H. pylori induced ulcer, when it's diagnosed H. pylori induced ulcer, so in that case, you have to give the antibiotics. And there is a standard antibiotics which we are using, clarithromycin, amoxicillin plus 3. And you have to complete the course and it will resolve. There is no need to take these medicines for a long time, right?
if it's a H pylori. You are not audible. Hello, now? Yes, sir, you are audible. Okay, so what I am telling is, I am going to share again. So peptic ulcers, these one, particularly peptic ulcers में जो हमारे aggressive factors होते हैं, there is a balance. So HCl से HCl is a strong acid. तो हमें जो प्रोटेक्ट करता है तो देयर इज ए डिफेंसिव लेयर, तो हमारे म्यूकस और बाइकार्बोनेट फॉर्म होते हैं जो कि हमें बचाते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस में क्या होगा, किसी का लेवल बढ़ जाएगा, किसी का लेवल कम हो जाएगा, दैट वी कॉल्ड ए इम्बैलेंस। तो इसमें किसका लेवल बढ़ेगा और किसका कम होगा, तब फिर पेप्टिक अल्सर बन सकता है। तो इसमें जो हमारे अग्रेसिव फैक्टर में आते हैं, जैसे स्टमक एसिड जो है किसी पेशेंट्स में बार बार ज्यादा बन रहा है, ज्यादा एसिड बनेगा, पैप्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, नसेड्स वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ओवर यूज करता जा रहा है, लंबे टाइम से खाता जा रहा है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया। तो these आर दी अग्रेसिव फैक्टर्स। और डिफेंसिव फैक्टर्स का लेवल अगर डिक्रीज हो गया, म्यूकस बाइकार्बोनेट्स इनका लेवल डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, आपका जो एसिड जो है वो अल्सर क्रिएट कर देगा, और उस अल्सर को हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, दैट वी कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो इटियोलॉजी जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, और हमारी जैसी कंट्री में जहाँ अभी तक पूरा हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो नहीं करते, तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नसेड, आजकल हम अननेसेसरी दवाइयाँ लेते हैं, जो ये जैसे आइबुप्रोफिन है, कुछ भी पेन किलर खा ली, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खा ली और लंबे समय से खा रहे हैं, तो उससे भी अल्सर बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नसेड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को कम कर देता है, जो कि एक डिफेंसिव फैक्टर प्ले रोल करता है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस में एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, स्पाइसी फूड लंबे टाइम से खाते जा रहे हो बहुत ज्यादा स्पाइसी, तो उससे भी अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं ही। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि आपको समझना पहले पड़ेगा कि ये एचसीएल हमारे स्टमक में बनता कैसे है और इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि हाँ अब हमें एच पॉजिटिव आयंस यहाँ पे स्टमक में रिलीज करो, तो वो एच पॉजिटिव आयन क्लोराइड से मिलकर HCl बनाएंगे। तो जब हमारा फूड गया तो हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, जी सेल्स हैं, जो गैस्ट्रिन रिलीज करके रिसेप्टर पे एक्टिवेट करके, और यहाँ पे एक पंप है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप मीन्स कि ये एच पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट करता है और पोटेशियम की, तो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है। और ये इंजाइम जो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, ये इसको रेगुलेट करता है। तो ये जो हमारा एसिटाइल कोलिन भी रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है इस प्रोटोन पंप को। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये जो होता है जैसे मैंने बताया ना कि रिसेप्टर अलग अलग तरह के हैं, कुछ इंजाइम लिंक्ड हैं, कुछ आपके जी प्रोटीन कपल्ड है, कुछ लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो एसिटाइल कोलिन जब M3 रिसेप्टर पे लगता है तो वो IP3 डैग पाथवे फॉलो करता है, तो उससे क्या होता है, ये प्रोटोन पंप जो है वो और एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होगा, H पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे, H पॉजिटिव ज्यादा बनेंगे, HCl ज्यादा बनेगा, HCl ज्यादा बनेगा तो वो अल्सर कर देगा।
ये तो होगी एक बात। दूसरा, एसिटाइल कोलिन जो है इनडायरेक्टली क्या करता है, एंटीरियोक्रोमेफिन सेल्स पे भी लग के हिस्टामिन को भी बढ़ाता है, और हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे एक्ट करके इस प्रोटोन पंप को और एक्टिवेट करते हैं। तो हमें जो दवाइयां जो यूज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक कि इसको बंद कर दो, हिस्टामिन का ब्लॉकर दे दो, इसको ब्लॉक कर दो, पंप को ही ब्लॉक कर दो, एंटासिड दे दो जो कि न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये सब दवाइयां पैथोजेनेसिस के बेसिस पे ही बनती हैं, राइट। एक तो ये अप्रोच होगी। दूसरा क्या है कि जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब जो डिफेंसिव लेयर है, ये इसको बढ़ाने के लिए भी हम दवाइयां देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, कि उसकी डिफेंसिव फैक्टर्स थोड़ा बढ़े। एचसीएल अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो थोड़ा ये डिफेंसिव भी हमारी मजबूत हो जाए। तो ये पैथोजेनेसिस है हमारी। तो पैथोजेनेसिस में आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखने में आपको शो करना है, अगर आप पैथोजेनेसिस और पेप्टिक अल्सर लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे मेंशन करना है ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl, over activations of this M3, over activation of proton pump, activations of H2, right, activations of this CCK2, these receptors, over activations, over activation, normal activations में आपका अल्सर नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए HCl हमें चाहिए, राइट। डाइजेशन में HCl प्ले सिग्निफिकेंट रोल। अब डायग्नोसिस हम उसके पेशेंट के सिम्टम के बेसिस पे ये सारे सिम्टम्स रहेंगे, और लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट जो मैं एक यहाँ पे डालना भूल गया, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, H पाइलोरी टेस्टिंग की भी की जाती है, क्योंकि H पाइलोरी इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्सर। एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि पाइप्स के थ्रू, मुंह के थ्रू इसोफेगस में इंजर्ट कर देते हैं, और उसके साथ कैमरा लगा होता है। तो जैसे इंजर्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कैमरा में उसको दिखता रहेगा कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा, यस यहाँ पे अल्सर है। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तब हम बायोप्सी पे चले जाते हैं फर्दर की, अच्छा बायोप्सी में देख लें कि अल्सर जो है अनट्रीटेड और अनकंट्रोल्ड जो है वो कैंसर भी कर सकता है। तो आपको देखना पड़ता है बायोप्सी में कि कहीं सेल कैंसरस तो नहीं बन रहे हैं। तो अर्ली फेसिस में अगर कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा तो ट्रीट बहुत इजीली हो जाता है। अदरवाइज आप सबको पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर सही से डायग्नोज नहीं हुई अर्ली फेसिस में तो फिर वो बहुत पेनफुल और डेथ भी कर देती है, राइट। तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया ऑन दी। आपको जब हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, वहीं से ही आप लोगों को सेंस हो जाना चाहिए खुद ही कि क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं इस डिजीज को ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले दवाइयों से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डिजीज होती क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं, किस चीज का लेवल बढ़ता है घटता है, तो हम क्या दवाइयां हो सकती हैं मार्केट में। तो यही दवाइयां हैं मार्केट में। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स, नाउ इट्स ओपन फॉर योर डिस्कशंस, so please ask your queries. I hope today's we will complete it by one. Yes, go ahead. Anyone? No? Any queries? Anything you want to add? So peptic ulcers में वही सब चीजें हैं। अगर मीन्स आप पूछें कि सर इसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए जो हमारे फैक्टर्स हैं कि नसेड्स जो हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनका अननेसेसरी यूज ना करें, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रखें, तो नहीं तो ओरल फिकल रूट के थ्रू ये H पाइलोरी ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। तो वो जब भी आप शौच के लिए जाएं तो हाथ सही से धोएं, H पाइलोरी जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस कम होंगे। दूसरा, जो स्पाइसी फूड काफ़ी लंबे टाइम से अगर कोई खा रहा है और उसको कुछ बर्निंग सेंसेशन भी हो रही हैं, क्योंकि अगेन बॉडी मेकअप सबका डिफरेंट है। अगर आप रीजन वाइज इंडिया में जाओगे तो कलकत्ता, बंगाल और इस साइड पे जाओगे तो वो लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, इधर जाओगे तो वो नॉर्मल खाते हैं। कोई मतलब रीजन वाइज लोगों का अलग अलग टेस्ट है और अलग अलग चीज़ें वो खाते हैं। कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया जाता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि वो स्पाइसी खाना खाते हैं तो उनको अल्सर होगा सबको, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से उनकी जनरेशन जो है वो चीजें खाती जा रही हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप आपके स्टेट में या आपके कल्चर में वो चीज स्पाइसी फूड का है नहीं, बट आपने वो शुरू कर दी और शुरू करने के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है और फिर भी आप नहीं खाते जा रहे हो, तो इट कुड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये सब चीजें हैं जो कि हमें देखनी होती हैं प्रिवेंशन के लिए।
राइट, नशेड्स हो गए, ये हो गए, स्ट्रेस इज ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर। और स्ट्रेस तो कई कई बीमारियों की को उत्पन्न करता है, ये आप सबको पता है स्ट्रेस। बट अगेन लिटिल बिट स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, कि स्ट्रेस की वजह से ही हम काम कर पाते हैं। और इंडियन लोगों की, हम लोगों की सबकी टेंडेंसी ये होती है, मुझे नहीं पता आप लोगों का, बट हमारी सबकी मोस्टली ये टेंडेंसी होती है कि जब तक डेडलाइन ना आ जाए, जब तक लास्ट डेट ना आ जाए, तब तक हम काम नहीं करते। और जब लास्ट डेट आ जाती है तब फिर स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि वो तो आपकी डेडलाइन आ गई, आपको तो कल एग्जाम देना है, अब वो उसमें तो चेंज नहीं कर सकते, तो इमिडिएटली फिर स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो वो सब चीजें हैं, स्ट्रेस इज द वन ऑफ द फैक्टर्स। So I think, okay, without taking much more time, so if there is no further questions, no questions, I can't say further questions because no one has asked anything. So thank you very much and have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.